Hello everyone. We were discussing formal letters, and in formal letters we were discussing business letter, how to write a inquiry letter, or how to write a letter for placing an order for some goods or service. Today we are going to discuss complaint letter. Okay, so how to frame a complaint letter? We are going to complain about some defective item or about some dissatisfactory service also. So as far as the format concerned, it will remain the same as we have already earlier discussed. First of all, we write sender's address, then the date on which we are writing the letter. After that, we will write the receiver's address, then subject, and then salutation. So here we take an example whose statement is: suppose you are Shashi Kiran of 21 Punjabi Bagh, Jalandhar. So here the address of the sender will be 21 Punjabi Bagh, Jalandhar. This address is being written on the behalf of Shashi Kiran. You will suppose yourself as Shashi Kiran. Okay. You bought a washing machine from Messrs. Anand Electronics, Amritsar. So Messrs. Anand Electronics, Amritsar will be the receiver. You will write down the complaint letter to Messrs. Anand Electronics, Amritsar. And for what item you are going to complain? Write a letter complaining about some fault in the washing machine. आपने जो washing machine purchase की है, there is some fault in that washing machine. So now you are going to complain about that washing machine. Okay. So in sender's address we will write down this address, 21 Punjabi Bagh, Jalandhar. Then we will write down the date on which we are writing the letter. It is May 24, 2021. Okay. After that, Messrs. Anand Electronics, Amritsar, Punjab. Then we will write down the subject. It will be simply you can write down complaining about some defective item, complaining about defective washing machine, or improper functioning of newly bought LG washing machine. LG washing machine, if it is not mentioned, the brand is not mentioned, you can write down any brand name, Whirlpool, LG, whatever you want. After that, salutation: dear sir, respected sir, or sir. After that, the body of your letter starts. So while starting a complaint letter, what you will write down? As I told you, in inquiry and placing an order, first of all, in the initial line, you introduce yourself. You give the introduction of the person on the behalf of whose you are writing the letter. But here, as you have made your purchase, you have purchased that particular item, so there is no need to give your introduction. It has already done. You have already introduced yourself when you made your purchase. Now you are complaining about your purchased item. So first of all, we will give complete details about the product that we are going to complain. Okay. So what will be the complete detail? First of all, you can start your letter like, I want to bring to your kind notice that I purchased an LG washing machine. Okay, write down the name of the product about which you are going to complain. TP14, ये उसके मॉडल का नाम है. On May 23, 2021, यानी कि यहाँ पे आप डेट कोई भी बैक डेट मेंशन करेंगे ऑन विच यू हैव मेड योर परचेज. ओके. एंड देन कैश मीमो
TPE 125/2021. So in first two lines we are just giving the details of the product so that the shopkeeper may know very well about which item we are complaining. उसको क्लियर होना चाहिए कि कौन से आइटम की बात हो रही है, क्योंकि देर आर सो मेनी आइटम्स सोल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. शॉप से तो बहुत सारे आइटम्स बिके होंगे उस दिन, तो आप पर्टिकुलर कौन से आइटम की कंप्लेन कर रहे हैं ये आपको क्लियर करना पड़ेगा. सो इसके लिए क्या है कि फर्स्ट यू मेंशन द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, देन डेट ऑन विच यू मेड योर परचेज, एंड देर मे बी सम रिसीट नंबर और सम कैश मीमो नंबर. यानी कि आपने वैसे प्रैक्टिकली भी देखा होगा, वेन एवर यू परचेज समथिंग you will receive a receipt from the shopkeeper. On that receipt, on the left hand corner side, date is mentioned and a number, and a particular number is also mentioned. This number is the cash memo number or receipt number. If you find this cash memo number somewhat typical, then you can write down cash memo number whatever 12/2021 और 14/5/2021. यानी कि कोई भी नंबर दे के आप वो ईयर मेंशन कर दें. दैट विल बी योर कैश मीमो नंबर और रिसिप्ट नंबर. ओके, सो यू कैन सिंपली स्टार्ट योर लेटर लाइक आई बॉट एन LG वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप ऑन डेटेड. अब किस डेट को आपने खरीदा था, it should be a back date, means you have purchased your washing machine earlier before 1 week or 10 days. हफ्ते या 10 दिन पहले आपने वो प्रोडक्ट खरीदा होगा. देन यू एनकाउंटर दैट पर्टिकुलर फॉल्ट. तब आपको पता लगा होगा कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है. तो आपने मेंशन किया कि आई बॉट एन LG वॉशिंग मशीन डेटेड, कोई भी बैक की डेट, like we are writing the letter today, so we can write down dated 15th May 2021. okay, wide का मतलब होता है बेटा रेफरेंस. हम कौन सी रिसीट नंबर का रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है, VIDE वाइड. कैश मीमो नंबर या फिर रिसीट नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर आप मेंशन कर दें. फ्रॉम यू, the machine carries a guarantee for 1 year from the date of its purchase. अब ये भी आपको प्रोडक्ट के साथ ही लिखा मिलता है. गारंटी या फिर वारंटी आपको साथ ही मेंशन होती है. इफ इट इज इन अ गारंटी ऑफ 1 year, then it is the responsibility of that seller if there is some fault in that particular item, so you can repair it or you can replace it. But if it is in warranty period, then you can claim only for the repair. It worked properly for a fortnight satisfactorily. Fortnight means for a period of 15 days. हुआ क्या, when you purchased that washing machine, it worked for 15 days very satisfactorily. But it is a matter of great regret that it has now started giving us trouble. लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ, it start creating problems. इसमें कुछ फॉल्ट आना शुरू हो गया. The automatic system has failed. As you purchased an automatic machine, but its automatic system has failed. वो काम ही नहीं कर रहा है automatic system. It also stops working in the middle of the process with under capacity of clothes. अब क्योंकि हर एक वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी होती है ना कि 5 kg लोड ये बियर करेगी या फिर 7 kg वट एवर. बट अगर हम इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी अगर इस वॉश कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट स्टॉप्स इन बिटवीन. तो भी ये काम करते करते बीच में रुक जाती थी. द ड्रायर इज ऑल्सो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. और इसका जो ड्रायर है जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, इट इज ऑल्सो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, वी मेंशन आवर प्रोडक्ट अबाउट
which we are complaining. After that we will mention its faults. So whatever fault you are going to mention, it should be according to your product. The faults, or you can say the faults will vary according to the product. अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन ना होके कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ मोबाइल फोन, तो आप सेम फॉल्ट्स नहीं लिखते कि इट्स ड्रायर इज नॉट वर्किंग एंड ऑल दैट. अकॉर्डिंग टू अ मोबाइल फोन यू हैव टू राइट डाउन द फॉल्ट्स, दैट its display is not clear, its touch keypad is not working, touchpad is not working, or voice is not clear. ठीक है, it doesn't support the second sim. इस तरह के आप क्या है फॉल्ट्स लिख सकते हैं. और कोई आइटम है, आप अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू विल राइट डाउन द फॉल्ट. ठीक है, अब आपने क्या है कि इसके फॉल्ट्स को मेंशन किया. देन so I request you to send authorized engineer to remove the fault or replace the machine as it is in guarantee period mentioned as per the guarantee card. यानी कि हमने क्या रिक्वेस्ट की है कि या तो आप अपने ऑथोराइज्ड इंजीनियर को भेजो इसको रिपेयर करने के लिए, या फिर आप इसको अपने एंड पे रिप्लेस करो. एज इट इज इन गारंटी पीरियड में है, देन वी कैन ऑल्सो क्लेम फॉर रिप्लेसमेंट. अदरवाइज इफ इट इज इन वारंटी पीरियड देन वी ओनली क्लेम फॉर रिपेयर. ओके, थैंक यू. योर्स फेथफुली, ट्रूली, sincerely, whatever you want to write, then signature and the name Shashi Kiran as mentioned in the statement. Okay, so this is the letter that you have to write for complaining about some defective item. Okay beta, देखो format में there is nothing new in the format, as you have already written in complaint or in letter to editor. Whatever the formal letter you are going to write, the format will remain the same. First of all you are writing sender's address, then date on which you are writing the letter, then receiver's address, then subject in a very brief manner, then salutation. After that, if you are writing for complaining, then first of all we will give complete details of the product about which we are going to complain, then what are the faults or what are the problems it started creating, and after that what is the remedy that you want from the seller. क्या आप सेलर से चाहते हैं, रिप्लेसमेंट चाहते हैं, रिपेयर चाहते हैं, वट एवर यू मेंशन इन द लास्ट. देन योर्स ट्रूली, वट एवर द नेम मेंशन इन द स्टेटमेंट. ओके, सो दिस इज द लेटर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट अ डिफेक्टिव आइटम. Okay beta, I hope you understand it well. I will also provide the PDF. Okay beta, have a nice day.